All right, so during a titration experiment, an acid is transferred into a burette. Okay, the diagram shows part of the burette at the start of the titration and at the end point. Now remember, burette, the reading on the burette tells me how much of the solution has gone out. Okay? It doesn't tell me how much is in there, it tells me how much has gone out. So in the beginning, at the start of the titration, you can see that 22.4 has gone out. So that's my starting value. And at the end, 27.3, that is what I have at the end. ठीक है, curve part को आपने ignore कर देना है. You are going to look at the flat part. So what's the volume of acid used during the titration? Obviously the one that is taken out. So your final answer is 27.3. Your initial value is 22.4. 27.3 minus 22.4 calculators आपके पास होने चाहिए और आपके पास ये आ जाएगा 4.9. And that's your answer. B. By the way, इस paper में the answer was at 20, the A grade was at 27. So अगर आप 13 गलत कर भी दो इसमें तो आपका A आ रहा है. But that doesn't mean कि आपने 13 गलत करने हैं. Our target here is to get 40 out of 40. All right, next. When calcium carbonate is added to dilute HCl, carbon dioxide gas is released. We know that that's not unique for calcium carbonate. All carbonates do that when they react with acids. Okay, three sets of apparatus are shown. Which set of apparatus are suitable together with stopwatch for following the rate? Remember, ये reaction एसिड बेस रिएक्शन को टेस्ट करने के लिए नहीं हो रहा है. ये रिएक्शन वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे रेट चेक करना है. और रेट के लिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा रेट मेजर करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए. एक आपको चाहिए टाइम, तो टाइम को तो उसने स्टॉपवॉच से मेजर कर लिया. दूसरा आपको चाहिए है चेंज. यू आर लुकिंग फॉर सम चेंज, समथिंग दैट यू कैन मेजर बेस्ड ऑन समथिंग दैट्स चेंजिंग during the reaction. Okay, so first of all, what's happening in one? What will change? You're reading the mass, right? So mass should change. Mass change होगा इसके अंदर. In this reaction, will the mass change? Any ideas? Then what do you think? सर होगा शायद. क्यों सर change होगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होएगी ना. तो वो क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होकर. सर तो रिएक्टेंट्स की मास कम हो जाएगी. नहीं, रिएक्टेंट्स का मास कम नहीं होएगा. बेसिकली पूरे सेटअप का मास कम हो जाएगा बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गोइंग टू इवॉल्व अवे. यू हैव कॉटन वूल, इट विल डिफ्यूज राइट थ्रू इट. Okay, so the mass is changing. We will see a trend, we will see a change. This is good enough. This setup will help. Okay, moving on. We have a tap funnel, we have calcium carbonate and HCl, and we have gas syringe collecting the gas. G, tap funnel hai, that means you can close the tap and so the gas that goes out, you can collect it. Now, what is the other thing that you're measuring? यहाँ पे तो आप change in mass देख रहे थे ना? So you're measuring the change in mass here. What are you measuring the change in? यहाँ पे क्या measure हो रहा है? Volume of gas. Volume of gas collected. Very good. So you're collecting gas and you're measuring the volume of gas. So yes, this is right. Okay, next one. Which sets of apparatus are suitable together with the stopwatch for following the rate? तो third वाले में क्या हो रहा है? You have a thistle funnel and there's a measuring cylinder. So यहाँ पे अगर यहाँ पर gas आ जाए so you have a measuring cylinder, you can measure how much gas is trapped here. So do you think this third setup is good for doing that, measuring the amount of gas coming in? Actually, third setup is not, because if you notice, क्यों नहीं? सर एक तो मेजरिंग सिलेंडर इतना एक्यूरेट नहीं है इस चीज के लिए. Good, it's not accurate, but still it is suitable. You're right, it's not the best choice that you have, but it is somewhat useful, right? मैं ही कह रहा हूं कि नंबर 3 तो suitable है ही नहीं. इस रिएक्शन को वो मेजर कर ही नहीं सकता इसका रेट. क्यों? ऐसा क्या है इसमें? सर द फनल, उसमें से गैस रिलीज हो जाएगी.
Very good. The thistle funnel is going to allow the gas to go out right through. There's nothing stopping it. You know, this is stopping it, but overhead you don't have it. So obviously only 1 and 2 is right. So first was B, second is B. All right. Chromatography can be used to separate and identify dyes present. Good. Chromatography के बारे में हमें ये बातें पता हैं. Which statement is correct? All right. A dye with an RF value of 1.2 can be present in a mixture. अब इसमें एक चीज ध्यान में रखो. RF क्या होता है? RF is a ratio. It's the ratio of distance traveled by solute divided by distance traveled by solvent. Solute क्या है? Solute is the thing that dissolved in that solvent and moved up on the paper. So यहाँ से starting point है, यहाँ से वो dissolve होता है, वो ऊपर चलता है. Why is it moving? It's moving because that liquid is carrying it. उस liquid ने उसे dissolve किया और ऊपर ले गया. तो यहाँ पर कहीं पे वो liquid आएगा और बीच में वो चीज आके जहां भी रुकना चाहेगी वो रुक जाएगी. तो इसका मतलब है कि हमेशा हम distance of solvent से compare कर रहे हैं उसको. तो 1.2 का मतलब क्या बनता है? इसका मतलब बनता है solute ने solvent से ज्यादा distance travel कर लिया. Right? The distance by solute will always be smaller than distance of solvent, which means the value will always be equal or less than 1. So that means 1.2 तो possible ही नहीं है. कभी भी कोई चीज solute जो है वो solvent के ऊपर नहीं जा सकता. वो 1.2 कब आएगा? जब solute का dot ऊपर हो और solvent का नीचे हो. ऐसे हो ही नहीं सकता है. तो this is wrong. A dye could have a different RF value if a different solvent was used. Yes, because everything depends on solubility. So one thing may have a lower RF value in water and a higher RF value in ethanol, which tells me that it dissolves more in ethanol than in water. तो ये तो बहुत आराम से possible है. All blue dyes have the same RF value. No, you cannot say that without looking at the shades of blue and looking at what solvents you use. Chromatography can only be used for colored substances such as dyes. Well, you might think so, but there is another chemical that allows us to override this. What do we call those chemicals? What do we call those chemicals? Locating agent. ठीक है? Do you get it? जी sir. Yes, sir. Okay. Petroleum is separated into useful fractions by fractional distillation. So yeah, our answer here will also be B. So अभी तक 3 B हो गए हैं. The position at which fractions x and y are collected from the fraction column are shown. Okay, what does that tell me about it? X ऊपर है, y नीचे है, इसका मतलब है x की density कम है, x ज्यादा volatile है, x में intermolecular forces weak हैं, x का melting boiling point कम है. ये सारी बातें मुझे x की fraction की position से पता चल रही हैं. Okay, which statement is correct? The temperature increases up the column. नहीं, हम नीचे से heat करते हैं. तो जो चीज ऊपर चली जाती है वो पहले बॉयल होकर चली गई थी लोअर टेम्परेचर पे, तो वो नीचे जब आओगे आप तो वहां पे हाई टेम्परेचर है. X condenses at a lower temperature than Y. Is that correct? Does X condense at a lower temperature than Y? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है या कंडेंसेशन पॉइंट कम है. Yes, that is true. Okay, B यहाँ पे भी हमारा ठीक है, but let's still consider the others. X has a higher boiling point than Y. No, X boils first, so it has a lower boiling point. X has a longer chain molecule than Y. No, X is more volatile. X, that means that X will have a smaller molecule than Y. ताकि वो जल्दी उसकी intermolecular forces कम है, वो जल्दी boil कर जाती है. That implies that it has a smaller molecule. Okay, 4 B हो गए. ठीक है. All right, aqueous zinc chloride is tested with various reagents. Which observation is correct? All right, aqueous ammonia gives a white precipitate which is soluble in excess reagent. You have zinc chloride, right? Zinc is the only ion that dissolves in both aqueous ammonia and sodium hydroxide.
दो ही चीजों के टेस्ट यहाँ पे आ सकते हैं, या जिंक का टेस्ट आएगा या क्लोराइड का टेस्ट आएगा। तो जिंक तो क्लियरली डिसॉल्व होता है अमोनिया में भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक्सेस में भी। सो देन द आंसर इज ए। Alright, copper turnings give a precipitate of zinc. That would be possible if copper was able to displace zinc. But that's not possible. Why isn't that possible? Why is it that when I Sir, put due to copper... its reactivity. Okay, it has to do with the reactivity, लेकिन ये इतना अच्छा आंसर नहीं है आपका। क्यों? इसमें हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं? आई एम सेइंग कि ये रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? Sir, copper is less reactive than zinc. Copper is less reactive than zinc. Perfect. Copper is less reactive, which means that it won't be able to displace zinc. In other words, zinc is more reactive. या हम ये भी कह सकते हैं कि zinc is a better reducing agent than copper. क्योंकि zinc जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर कम slowly कर रहा है comparatively. That means zinc is more reactive. Okay. Acidified silver nitrate gives a yellow precipitate. Silver का जब भी हमारे पास acidified solution आएगा, तो हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके आयंस को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके आयंस को टेस्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे क्लोराइड है, तो रिमेंबर क्लोराइड विल गिव अस अ वाइट प्रेसिपिटेट, आयोडाइड विल गिव अस अ येलो प्रेसिपिटेट। सो ये वाली बात अगर तो वाइट होता तो फिर ठीक था, येलो होने की वजह से ये गलत हो गया। और सेम फॉर द नेक्स्ट वन। Okay, moving on. When aqueous sodium hydroxide is added to a solution, white precipitate forms. Okay, so क्या हुआ है? We added sodium hydroxide, and then we got a white precipitate. When excess sodium hydroxide is added. So when we added it in excess, we are getting white precipitate. Okay, which ion could be present in the solution? So which one will give us a white precipitate? So we have sodium hydroxide, एल्यूमिनियम भी व्हाइट प्रेसिपिटेट दे सकता है, कैल्शियम भी व्हाइट प्रेसिपिटेट दे सकता है, कॉपर व्हाइट नहीं देगा क्योंकि कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल है, सोडियम व्हाइट नहीं देगा क्योंकि सोडियम इज ऑलवेज सॉल्युबल। ओके, सो एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम में से कौन सा वाला डिसॉल्व्स इन एक्सेस? नोटिस दिस डिसॉल्व पार्ट, सो एल्यूमिनियम डिसॉल्व्स, ठीक है। So we have answer as A here. And do you understand why others are not the answer? If anybody is confused, मुझे पूछ लें. All right, next. A sample of gas occupies a volume of 2 dm cube at room temperature and pressure. Which changes would both decrease the volume occupied by the gas? अब इसमें हमारे पास एक relation है जो आपको याद रखना चाहिए. The general relation is that PV equals KT, but this equation we don't usually teach in O levels. हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, हम कहते हैं ये है और ये है, ये तीन रिलेशन बना देते हैं, इसी से बना देते हैं, ठीक है। सो अब आप इसमें देखो, अगर मैं अभी उसकी वॉल्यूम 2 dm क्यूब है, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, सो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी, पार्टिकल्स विल हैव लेसर काइनेटिक एनर्जी, वो पास आ जाएंगे। अच्छा, प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी बिकॉज द रिलेशन इज इनवर्स, इफ आई डिक्रीज दिस विल इंक्रीज। मुझे क्या करना है? मुझे दोनों से डिक्रीज करना है वॉल्यूम को, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास क्या ऑप्शन है? लेट्स सी, मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं तो वॉल्यूम डिक्रीज होती है, सो मुझे प्रेशर को इंक्रीज करना है। We want to squeeze the particles closer together so that the volume is less, and we want to decrease the temperature because volume and temperature are directly proportional and volume and pressure is inversely proportional. So based on this, our answer would be C, right? An ion contains 20 electrons and has a charge of 3. From which element was the ion formed? It has 20 electrons.
That means it has 20 electrons after losing 3. So that means you're looking for something with 23 electrons in it. तो periodic table देखें 23 electrons किसके पास होते हैं? Said D. D, very good, vanadium. वेनेडियम के बारे में एक यूज है. वेनेडियम कहाँ यूज होता है? क्या है? Vanadium 5 oxide. Catalyst. Very good. Vanadium 5 oxide is used as a catalyst when you're manufacturing sulfur trioxide. Contact process में. ठीक है? V2O5 is used. All right. Which statement is correct? Diamond conducts electricity. ये तो बात यहीं पे गलत होगी. आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. Graphite has delocalized ions. नहीं. Graphite में तो ions होते ही नहीं है. Atoms होते हैं with one electron that is free. Each atom has one electron that's free. In diamond, each carbon atom is joined to 3 other carbon atoms. अगर वो ऐसे करे तो चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, डायमंड कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा. कितनी जबरदस्त बात है, बट ऐसा नहीं होता. Alright, 9D. The layered structure of graphite makes it slippery. Yes, पहले शुरू से हम बात करते आए, जहां layers हैं वो चीज ductile है, malleable है, slippery है. We use graphite as a lubricant because of this. So yes, this is a fact and this is a recall question. ये आपको पता होना चाहिए. Alright, which material has the highest melting point? अब इसमें हमें उसकी बॉन्डिंग के बारे में बेसिकली वो सवाल पूछ रहा है. तो अमोनिया हमें पता है गैस होता है, मीथेन गैस होती है, वाटर लिक्विड होता है और सोडियम क्लोराइड सॉलिड होता है. अगर आपको आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग देख के यहां से समझ नहीं भी आ रही, जस्ट रेफर टू योर डेली एक्सपीरियंस. मीथेन, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर तो हम सभी यूज कर चुके हैं ना. So that means sodium chloride is the answer. Yes, Alina, you're absolutely right. I see a comment that CO2 is, this is supposed to be carbon dioxide, right? So carbon dioxide is soluble in water. It is, but I don't see how that's relevant. Oh, it was for another question. Okay. Yes, carbon dioxide is soluble in water, yes. All right, which statement describes ionic bond? Ionic bond क्या होता है? Remember, हम लोगों को ना एक बड़ी अजीब सी आदत पड़ गई है. डेफिनेशन पूछता है कि ये बॉन्ड क्या होती है, हम बता देते हैं कि वो बॉन्ड बनती कैसे है, जो कि बड़ी अजीब सी चीज है. मतलब इट्स नॉट द राइट वे टू डिफाइन थिंग्स, राइट? सो अ बॉन्ड इज बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स. सो व्हेन दे आस्क यू टू डिस्क्राइब, तो आप तब तो उसके बारे में बता सकते हैं कि वो कैसे बनी या उसकी हिस्ट्री, लेकिन जब वो आपसे उसको डिफाइन करने का बोल रहा है तो द स्टार्टिंग वैल्यू शुड बी, स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी कि आप बताएं वो फोर्स कहां से आ रही है. सो अ लैटिस ऑफ आयंस इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, it does describe, but it's not describing ionic bonding. It's describing structure of metallic bond or metallic substances. तो ये ठीक नहीं है बात. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये बात ठीक लग रही है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो अट्रैक्शन से बात शुरू कर रहा है कि हाँ बॉन्ड एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस. यस, परफेक्ट. दिस इज द वे टू गो. C, the sharing of electrons between atoms to gain a noble gas. Not really. That is how covalent bond forms. It's not covalent bond, it's how it's formed. And D is the transfer of electron from atoms of a non-metal to the atoms of a metal. ये बात भी गलत है. Non-metal metal को इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? उसको तो चाहिए होते हैं 8 बनाने के लिए. All right. Which substance contains at least one double bond? So let's just make the structure. Let's make the Lewis structure for this. So ethene is this, right? O2 is this. C2H6 is this. And CO2 is this. So double bond कहां पर है? 1 में है, ठीक है, 2 में है, 4 में है. 1, 2 and 4 वाली जो भी ऑप्शन है C है, वो ठीक है. Magnesium will react with aqueous copper 2 sulfate to form copper and aqueous magnesium sulfate. What is this telling me? It's telling me that magnesium is more reactive than copper.
So magnesium is in the reactant, copper 2 sulfate is in the reactant, copper and magnesium sulfate are in the products. ठीक है, पहली बात तो ये होगी, तो ये हमें क्लियर नजर आ रहा है ए इज द आंसर. अच्छा, अब इस अगर ए आंसर है, कैन यू गाइस टेल मी व्हाट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी बिफोर द रिएक्शन हैपेंस? Come on, guys. Yeah, Alina, you're right. Amna as well. It is blue in the beginning, yes. And afterwards, magnesium sulfate is aqueous, right? So it's going to be colorless. So the solution goes blue to colorless. Acha, you will get some solid particles in the solution. What color do those have? Copper निकलेगा ना? उस copper का क्या color होता है? So pink. पिंक, वेरी गुड. तो ये कलर्स याद रखें, ठीक है. आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सॉल्ट जो वे एक्वस होता है और उसमें ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा, ठीक है, नॉन ट्रांजिशन मेटल, वो वाला सॉल्ट कलरलेस हमें बताएगा सॉल्यूशन. आपको पता होना चाहिए कि कॉपर पिंक होता है, आपको पता होना चाहिए मोस्ट मेटल्स आर ग्रे व्हेन दे आर सॉलिड, और कॉपर सल्फेट एक्वस इज ब्लू. ठीक है, तो ये कलर्स हमें याद होने चाहिए. Okay, a sample of magnesium hydroxide has a mass of 4.63 grams. How many moles of magnesium hydroxide are present? Really easy. 8 मोल का mass निकाल लें, unitary method लगा लें, ठीक है. तो magnesium hydroxide, सबसे पहले तो हमें formula से ही आना चाहिए. तो magnesium is +2, hydroxide is -1. Cross multiply, MgOH2 हमारा answer होगा. And now you can simply add the masses. Magnesium is 24. And then you have 16 plus 1 for this. So what is 34 plus 24? 58, I guess. ठीक है, तो ये 1 मोल का mass है. ठीक है, 1 mole is 58 grams for magnesium hydroxide, provided my calculation is right. 4.63 divided by that will tell me कि ये कितने moles है. तो ये B आंसर बन रहा है मेरा तो. ठीक है, so that is 0.0798 moles. All right, which statement is correct? The concentration of solution is expressed in dm cube per volume. नहीं, ये उल्टा है. वो आपको confuse करना चाह रहा है. Concentration क्या होती है? Concentration is how much of the solute you have and how much volume the solution has. So mole per dm cube. That's the way. All right, B. Empirical formula always gives the actual numbers. नहीं, गलत बात. The molecular formula of a compound always contains more atoms than empirical formula. You just need one exception to prove this wrong. And you don't have to think very hard. H2O. There you go. Empirical formula भी वही है, molecular formula भी वही है. गलत बात होगी. The relative atomic mass of an atom element is the average mass of one atom of the element compared to or divided by 1/12 the mass of one atom of carbon 12. Yes, exactly. ये हमने definition शुरू में बिल्कुल पढ़ी थी, तो ये बात बिल्कुल ठीक है. Which sample contains the most atoms? Interesting. हमें atoms निकालने हैं. तो पहले तो हम देखते हैं कि एक मोल इनकी कितने होते हैं. पहले इसको देख लो. CO2 है, CH4 है, HCl है. अब जरा मुझे बताना, 1 mole of this, how many atoms does this have? So H2O, 1 mole has 3 moles of atoms. Carbon dioxide 3 moles, CH4 5 moles, HCl 2 moles. ये atoms count कर रहा हूं मैं. Zen, which question are you talking about? Number 15. Yeah, the answer is D. Now, 1 mole of this will have this many moles of atoms, but we don't have them. How much do we have? 0.5 moles of water, 1.5 बन गया. 1 mole of carbon dioxide 3 रहेगा. 1 mole of methane 5 रहेगा. 2 mole of HCl 4 हो जाएगा. We just multiply. So the answer is clearly C. कोई problem है इसमें? अगर हो तो पूछ लीजिए. The equation shows the production of iron by the reduction of iron 3 oxide. Reduce कर रहा है वो iron 3 oxide को. That means CO is a reducing agent. और हमें ये बात पता है, carbon monoxide is a very good reducing agent.
Carbon monoxide is hazardous. What hazard is associated with carbon monoxide, guys? It is? I'm sorry. So it's So it poisonous. is poisonous. It is poisonous. It's toxic. Yes. Okay. 80 tons of iron 3 oxide produces 50 tons of iron. What is the percentage yield? So let me see. Let's just take the MR values here. This is 56 times 2, so I'm just going to plug it in a calculator. 56 times 2 plus 3 times 16. That is 160 of this. And it should produce 56 times 2 112 of this. So इसका मतलब है अगर हमारे पास 160 आयरन ऑक्साइड हो आयरन 3 ऑक्साइड तो 112 आयरन प्रोड्यूस होना चाहिए ठीक है अब इसका मतलब है 160 ये है तो 112 होना चाहिए अगर ये 80 होगा तो कितना प्रोड्यूस होगा क्रॉस मल्टीप्लाई सो यू नो कि हमारे पास 56 प्रोड्यूस होगा हुआ कितना 50 the 50 compared to 56 in percentage terms, what percentage is that? So 50 divided by 56, that is 89.3%. Okay? So my answer is D. All right, aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed using copper electrodes. The current is constant, the anode is weighed at regular time intervals. Which graph is obtained when the mass of anode is plotted against time? हो क्या रहा है यहाँ पे copper electrodes हैं तो anode should dissolve. हमने पढ़ा हुआ है a reactive anode ionizes itself. So first rule of electrolysis, a reactive anode. We have a reactive anode. So ये anode reduce होएगा और किस तरह इसका mass कम होगा? इसका mass कम होता जाएगा. ठीक है? किस तरह से? Because the current is constant, तो वो constantly कम होगा. Okay, and that's how the mass keeps on decreasing. और एक ही ग्राफ है जो हमें बता रहा है कि वो डिक्रीज कर रहा है सी ए जो है वो नहीं होगा क्योंकि ए में उसकी फॉल बहुत अजीब सी है शुरू में बहुत ज्यादा फॉल कर रहा है उसके बाद बहुत स्लो फॉल कर रहा है दिस टेल्स मी कि शुरू में बहुत ज्यादा करंट था बाद में बहुत कम करंट था ऐसा नहीं है करंट इज कांस्टेंट व्हिच मींस कि वो कांस्टेंटली फॉल करेगा सी इज द आंसर यही अगर वो कैथोड पे कर दे तो बी इज द आंसर कि कैथोड का अपना कुछ मैस है और उसमें मैस इंक्रीज करना शुरू कर गया. All right, the diagram shows the electrolysis of mixture of aqueous copper to nitrate, interesting, and silver nitrate. दोनों हमारे पास मिक्स हैं. अच्छा, अब हमें पता है कि copper is more reactive, silver is less reactive, and obviously these are aqueous, so हमारे पास वो भी होंगे. So H plus है, copper है, और silver है. सबसे less reactive है silver. The least reactive ion discharges ये हमारा second rule है except concentrated halogen. ठीक है हमारे पास halogen नहीं है nitrates हैं OH minus है. It can be deduced that dash is initially deposited at electrode. ठीक है देखते हैं सबसे पहले तो सिल्वर ने जाना है क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है और वो कहाँ जाएगी सिल्वर के पास है पॉजिटिव चार्ज तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगी जिसको हम कैथोड कहते हैं. So it's going to go towards Y. All right. Energy profile diagram of a chemical reaction is shown. What is the value of the activation energy of the reaction? इसमें आपको एरोज बनाने आने चाहिए आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी है और ये हमेशा डेल्टा एच है. ठीक है क्लियरली पता होना चाहिए. तो इस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी क्या है 250 माइनस 150 पॉजिटिव 100 साइन इज इंपॉर्टेंट डेल्टा एच क्या है 50 minus 150 ending value minus initial value 50 minus 150 that is minus 100. ठीक है तो ये एरोज की डायरेक्शन भी क्लियर होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव. डज एनीबॉडी नो व्हाई इट इज पॉजिटिव every single time? Why is activation energy always positive?
जी बताएं. Zain's answer is a little vague. Yes, Alina, what did you want to say? Nothing, sir. Yeah, so activation energy is always positive because it's the energy required to start a reaction. And when you start a reaction, you have to break some bonds. You have to break the bonds in the reactants so that they can form these free atoms that can then react and make new bonds. So bond breaking is always endothermic, which is why activation energy is always positive. You always have to supply energy to break the bonds and start the reaction. All right, good. We are down 20 questions. All right, which statement describes the conversion of magnesium atoms to magnesium ions? It's a no-brainer. Magnesium atom and magnesium ion बनेगा. हमें क्या देखना है? Periodic table में magnesium metal है कि non-metal है? Metal है. Metal है तो electrons lose करेगा. Lose करने को क्या कहते हैं? Oxidation. बात खत्म. So it's a oxidation because there's a loss of electrons. B. When water is a liquid, it ionizes slightly. The forward reaction is endothermic because bonds are breaking. Okay. When the temperature of water is increased, which change takes place? अच्छा, अब इसके लिए पहले मुझे ये बताएं, एसिडिक चीज क्या करती है? What does an acid do? What's the definition? Come on, guys. What's the definition of acids? Acids give protons. Acids give H positive. Okay. So if the thing gives more H positive, that means that it is becoming acidic. Okay. Next, alkali क्या करती है? Alkali gives OH minus. So if something is giving more OH minus, then that means it's becoming more alkaline. All right. So what are we doing here? We are basically heating it, right? That means it should go towards the side that is endothermic. All right. So that means it should go in the forward direction. So we can say that when the temperature is higher, water is ionizing more. Okay. So what does that mean? Is water becoming more acidic? Turns out it isn't. Sure, the equilibrium is going to the right, but H positive तो उतने ही हैं जितने OH negative हैं. तो the amount of H positive, the concentration is still the same. तो ये acidic नहीं हो रहा. Water becomes alkaline. ये भी बात गलत है. Water is giving OH minus, true, but the number or the concentration is still the same as H positive. तो ये भी नहीं हो रहा. Water forms more ions. Yes, that is true. Water is ionizing more. So इससे हमें clearly पता लग गया कि it is 3. 3 is the right answer. All right. Which salt could be prepared by precipitation? Insoluble salts. That's what we form through precipitation. तो यहाँ पे solubility rules याद करने हैं. Solubility rules मैं आपको दोबारा याद करवा देता हूँ. Snap salts are always soluble. Snap means sodium nitrates, ammonium, potassium. These salts are always soluble. तो इनको तो हम precipitation से नहीं बनाएंगे. फिर हमारे पास different salts हैं. We have sulfate और इसके लिए हमने याद किया था. Please call back. ये insoluble होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल है, हम इसको प्रेसिपिटेशन से बना सकते हैं. ठीक है. अच्छा, फिर हमने देखा था कि हमारे पास हैलाइड आयंस हों तो हमें पता है सिल्वर, मर्करी, लेड, these are insoluble. Do we have something like this? Yes, we do. Lead chloride insoluble, halide ion. तो ये भी हमारे पास ठीक हो जाएगा कि ये भी पॉसिबल है. अच्छा, कॉपर 2 क्लोराइड सॉल्युबल है, सिल्वर, लेड, मर्करी के अलावा है तो सॉल्युबल है. जिंक सल्फेट सॉल्युबल है, प्लीज कॉल बैक में नहीं आता, soluble है. So 3 and 4 are insoluble. We cannot make them through precipitation. We'll do it for 1 and 2. Okay. Silver is below hydrogen in the reactivity series. That means silver is less reactive than hydrogen. That also means silver will not be able to react with acids. Which row describes the chemicals used and the method of separation used to prepare a pure sample of silver chloride? Silver chloride, interesting. Silver chloride is insoluble. ठीक है, तो precipitation reaction से होगा, insoluble है,
तो इसका मतलब है बाद में जो भी चीज बनेगी उसको मैं फिल्टर आउट कर सकता हूँ, उसके क्रिस्टल्स नहीं बनाऊंगा मैं डायरेक्टली, पहले मैं उसे फिल्टर आउट करूंगा। तो एक तो मेरे पास ऑप्शन आ गई फिल्ट्रेशन, सो इट्स ईदर बी और डी। इट कैन नॉट बी बी बिकॉज सिल्वर तो HCl से रिएक्ट करेगा ही नहीं, सिल्वर इज लो हाइड्रोजन, देखिए उसने खुद बता दिया आपको, हिंट इज इन द क्वेश्चन। सो बी कैन नॉट बी द आंसर, it will be D, which is ionic precipitation या precipitation reaction. Okay. By the way, what color is silver chloride? Come on, guys. What color is silver chloride? White. Yes. All right. Ammonia is manufactured by the Haber process. We have this thing here. Forward reaction is exothermic. All right. That tells me forward reactions exothermic matlab reaction will go towards the left if I increase the temperature. All right. A low pressure is used to shift the position to the right. Pressure का exothermic से कोई ताल्लुक नहीं है. Pressure का ताल्लुक होता है number of gaseous moles के साथ. Gaseous moles. Remember this thing. So we have more gaseous moles on the left and less gaseous moles on the right. So if I want to move it to the right, I should increase the pressure, ना? तो ये गलत हो गया. B. A high temperature is used to shift the position to the right. गलत. ऐसा हो ही नहीं सकता. High temperature होगा left को जाएगा. It will absorb the extra energy that you're giving it by heating it up. So it will go to the endothermic side. गलत है. An iron catalyst is used to shift the position. No. Catalyst cannot do anything to the equilibrium. It can only speed up the reaction of both sides. तो वो तेज कर देगा. Equilibrium को नहीं कहीं वो shift कर सकता. All right. D. Nitrogen used is obtained from the air. Yes. How much percentage of air is nitrogen? You need to remember this. लिख लें 78 or 79% if you're in O levels and 79 or 80% if you're in IGCSE. I don't know, but they have different values. Oxygen is 20% if you're in O levels and 20 or 21% if you're in IGCSE. All right. The table contains some facts about sulfur dioxide and sulfuric acid and comments on those facts. Okay, let's see. In the manufacture of sulfuric acid, sulfur reacts with oxygen to make sulfur trioxide. Sulfur reacts with oxygen to make sulfur trioxide? नहीं, sulfur burn करता है, oxygen से react करता है, sulfur dioxide बनाता है. तो ये directly sulfur trioxide तो बनता ही नहीं है. Sulfur dioxide further oxidizes to make sulfur trioxide. तो ये ठीक नहीं लग रहा. B. Nickel is used as a catalyst in the contact process. ना जी. Contact process में अच्छा catalyst भी हम याद कर लेते हैं. Nickel in hydrogenation, iron in Haber process, V2O5 in contact process, rhodium and platinum in catalytic converters, chlorophyll in photosynthesis, acid या phosphoric acid in manufacturing ethanol और alcohols जब हम hydrolysis करते हैं, and aluminium oxide in cracking. 6 कैटलिस्ट आपको बता दें, जो उनमें से पहले 4 तो बहुत जरूरी हैं, उन पे सवाल आते हैं, बाकी 3 आप चलें, सॉरी बाकी 2 नहीं भी याद तो खैर दोबारा बता देता हूं. Nickel in hydrogenation to form margarine, iron in Haber process to make ammonia, V2O5 in contact process to make sulfur trioxide, rhodium and platinum in catalytic converters. वहां पे 2-3 redox reactions होते हैं. Chlorophyll in photosynthesis. क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोफिल है. केमिकल का नाम बताना है. Yeast in fermentation. ये 6 तो कंफर्म आने चाहिए जितने भी हमने किए हैं. बाकी इसके अलावा 2 बता देता हूँ. जी सर आयरन का क्या था? हार्बर प्रोसेस मेकिंग अमोनिया.
and last two are aluminium oxide in cracking, अब ये ना भी याद हो तो खैर है, and phosphoric acid in hydrolysis, जब आप अल्कोहल बनाते हो स्टीम ऐड करके, phosphoric acid. Okay, let's do the next one. Sulfuric acid is used in car batteries. बात बिल्कुल ठीक है, होता है यूज. This increases the efficiency of petrol engine. कौन सा पेट्रोल इंजन है जिसको बैटरी से कोई काम करना है? बैटरी जस्ट गिव्स द इग्निशन स्विच, उससे कोई स्पार्क आता है, वो लाइट्स ऑन करती है. पेट्रोल इंजन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वहां कंबशन हो रही होती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रही होती है. सो सी का रीजन गलत है. डी देखते हैं. द यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल इज बेनिफिशियल बिकॉज इट मिनिमाइज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन. बिल्कुल ठीक हो सकता है. व्हाट्स द रोल ऑफ सल्फर इन एसिड रेन? सल्फर बर्न्स टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड व्हिच डिसॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस एसिड्स. तो ये सल्फर अगर कम होगा तो ऑब्वियसली वो सल्फर डाइऑक्साइड कम बनेगी, एसिड रेन कम होगी. और इसकी रीजन क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक बिकॉज इट्स द ऑक्साइड ऑफ अ नॉन मेटल. ये बात ठीक है, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स का हमने पढ़ा हुआ है कि देयर आर थ्री दैट आर न्यूट्रल: कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर. बाकी जितने नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो हमने पढ़ा हुआ है कि वो एसिडिक है, वो भी आपको याद होने चाहिए. गुड क्वेश्चन. ऑलराइट, नंबर 27. An atom of which element has the same electronic configuration as an atom of an ion of strontium? You will need periodic table for this. Okay, strontium को देख लेते हैं. strontium के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? स्ट्रॉन्शियम जी, होल्ड ऑन, 38 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास. इसका मतलब है ग्रुप टू में तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बनाएगा. अब पीरियोडिक टेबल देखें, 2 स्टेप पीछे कौन सा है? टेक द पीरियोडिक टेबल, यहां पे होगा, ये पीरियोडिक टेबल है, सॉरी उल्टा सा है, ये स्ट्रॉन्शियम है. 2 स्टेप पीछे चले जाएं, 1 2, ये लीजिए, ये क्रिप्टॉन है. This is the one that's 2 steps back, and that's the one it forms after losing 2 electrons. So yeah, that's the answer. Krypton. Okay, metals have high melting point. What's the reason? High melting point, low melting point, जो मर्जी चीज है उसका ताल्लुक उसकी इंटरमोलिकुलर या जो भी इंटरपार्टिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसके साथ है. मेटल में मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस होता है. ये हमें याद है. अगेन ये रिकॉल का क्वेश्चन है. डी आंसर है. देख लें, कोई कंफ्यूजन हो पूछ लें. ऑलराइट, 29. What happens when a strip of silver is immersed in copper 2 sulfate? सिल्वर मेटल है, कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन है, सिल्वर कुछ नहीं कर सकता उसका. और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन सिल्वर का कुछ नहीं कर सकता. क्यों? उसको इंटरेस्ट ही नहीं है. सिल्वर इज लेस एक्टिव देन कॉपर. कॉपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, वो तो अपनी जिंदगी जी रहा है, जो उसे चाहिए था जिंदगी में अचीव कर लिया उसने. सिल्वर विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, नो रिएक्शन occurs. Alright, 4 metals and hydrogen are arranged in order of decreasing reactivity. Which statement about these elements is correct? Alright, decreasing reactivity. Alright, aluminium is formed when aluminium oxide is heated with hydrogen. इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि हाइड्रोजन ने एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दिया. ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है. कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम एक्वा जिंक सल्फेट. वही रीजन बी पे भी अप्लाई होती है. कॉपर नहीं कर सकता डिस्प्लेस, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है. सी, कॉपर इज फॉर्म्ड व्हेन कॉपर 2 ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन. ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू. कॉपर 2 ऑक्साइड इज ब्लैक सॉलिड. ये भी कहीं पे लिख लें, कॉपर 2 ऑक्साइड इज ब्लैक सॉलिड. यू पास हाइड्रोजन थ्रू इट, ऑब्वियसली हाइड्रोजन विल रिएक्ट और क्या बनेगा? कॉपर 2 ऑक्साइड है,
हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है, वाटर बनाएगा, स्टीम बन के निकल जाएगी, कॉपर बन जाएगा। इसका कलर है ब्लैक, इसका कलर है पिंक, क्लियरली नजर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात बताएं, should we use, if I do this reaction to extract copper, should I use copper oxide in excess or should I use hydrogen in excess? कॉपर ऑक्साइड। क्यों? अभी कहना चाह रही हूँ जो कि एंड पे चीज मेरे पास चाहिए कॉपर ऑक्साइड बचना चाहिए। सर, मुझे शायद कंफ्यूजन है, लेकिन सर जो चीज चाहिए होती है उसको एक्सेस में लेते हैं। उल्टा बोल रही हैं आप, जो चीज चाहिए उस स्टेट की चीज को एक्सेस में नहीं लेते, एक्सट्रैक्शन मुश्किल हो जाती है। हाई टेम्परेचर पे करते हैं रिएक्शन। सॉलिड कॉपर एंड पे बचना चाहिए ना, तो सॉलिड मैं चाहता हूं पूरे का पूरा खत्म हो जाए। द ओनली सॉलिड आई वांट एट द एंड शुड बी कॉपर, ओनली सॉलिड आई वांट टू रिमेन। तो इसलिए मेरा आंसर होगा हाइड्रोजन। If I want if I have hydrogen in excess, all copper will react and copper will be left over. Only solid available. उसको मैं निकाल लूंगा आराम से। अगर ऐसा नहीं होगा तो पिंक कॉपर और ब्लैक सॉलिड मिक्स हुए होंगे, उनमें से कॉपर को निकालना मुश्किल काम है। Alright, we have 10 questions left. If you can stay, that's fine. If you have to leave, I'll upload the recording for you. Alright, aluminium is extracted from its ore using electrolysis. We know this, Al2O3 का करते हैं। Which statement what the electrodes used is correct? Electrodes हम graphite के use करते हैं, cheap हैं, replace करने पड़ते हैं, ठीक है, और unreactive है। तो दो advantages, एक disadvantage। Anode is made of graphite. Yes, true. Cathode भी उसी से होता है। All right, gas X is present in dry air and may contribute to global warming. Dry air में ये gas होती है। Okay, what is X? Now, अब उसने कहा है may contribute to global warming, इसका मतलब है उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता। मीथेन मेन ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, हाइड्रोकार्बन है। Nitrogen dioxide and sulfur dioxide, they're bad for the environment, but for a different reason. They are causing acid rain. So our answer is B. All right, 4 processes are used during the purification of water. Use of carbon, desalination, chlorination, filtration. Carbon क्यों use करते हैं? Odor treatment के लिए. Desalination क्यों करते हैं? Soluble impurities को खत्म करने के लिए. Chlorination क्यों करते हैं? बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। फिल्ट्रेशन क्यों करते हैं? इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को खत्म करने के लिए। तो आपने इनको मैच करना है। सो लेट्स डू इट। फिल्ट्रेशन फॉर रिमूवल ऑफ सॉलिड्स, क्लोरिनेशन फॉर डिसइंफेक्शन, डीसैलिनेशन डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स के लिए, एंड कार्बन टू गेट रिड ऑफ ओडर्स। सर बी। So yeah, जो भी हमारा मैच करता है वो आंसर होगा। All right, propane undergoes substitution reaction when mixed with chlorine gas in the presence of ultraviolet rays. क्यों अल्ट्रावायलेट लाइट चाहिए? ताकि क्लोरीन की बॉन्ड टूट जाए और फिर क्या होगा? क्लोरीन विल रिप्लेस हाइड्रोजन। ध्यान में रखिएगा, क्लोरीन विल रिप्लेस हाइड्रोजन। तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी, ठीक है। तो विच compound could be formed when propane and chlorine are mixed? So HCl बनेगा और एक alkane with some halogen in that, halogen alkane कहते हैं उसको, वो बनेगा। तो देख लें कहां पर हो रहा है ऐसे। पहली बात है प्रोपेन है तो 3 कार्बन होने चाहिए, 2 वाली कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक क्लोरीन वहां आएगी और उसको रिप्लेस कर देगी, ठीक है। तो हमारे पास आप देख लो कौन सी ऑप्शन आपके ख्याल में ठीक है। लेट्स सी, ए। में क्या हो रहा है? A had 2 hydrogens, both of which have been replaced. पॉसिबिलिटी तो है, बन सकता है। पहले एक रिप्लेस हो जाए फिर दूसरी रिप्लेस हो जाए, बिल्कुल ठीक है। 3 कार्बन भी हैं, मेक सेंस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप अगर क्लोरीन ऐड कर रहे हो यहाँ पे तो ये भी 2 स्टेप्स में होगी, इकट्ठे नहीं हो सकती। ये तो ऐसे लग रहा है एडिशन होगी है, ठीक है।
ये नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि क्या वो शुरू में C2H4 थी, या एक पॉसिबिलिटी है, या ये कि प्रोपेन 2 दफा सब्स्टिट्यूशन किया। तो अगर ये करना चाहे तो ये बन सकता है, पहले एक क्लोरीन रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, फिर दूसरा करेगा, पॉसिबिलिटी है, लेकिन प्रोपेन से तो नहीं हो सकता ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। CH3 CH2 CH3 Cl, ये क्या किया है इसने? एक कार्बन की 5 बॉन्ड्स बना दी, उसके बाद 3 हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, कार्बन भी लगा है, क्लोरीन भी लगा हुआ है, गलत। डी, कार्बन ही 4 हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ए इज द आंसर। Alright, the hydrocarbon, this thing will undergo a number of chemical reactions. Can anybody name this? ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? I'm talking about 3 carbons, first पे 3 hydrogens, second पे 1, दूसरे पे 2, तो obviously कार्बन की बॉन्ड पूरी नहीं बनना। What family? Ene. How many carbons? 3. Propene. Bond be broken. कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड तोड़ना है हमने। जब आप बर्न करोगे तब सिंगल बॉन्ड टूटेगा। I'm sorry I got disconnected. Yeah, so that is propene. If you want to leave, you have to go to some other class. Your free. Compounds can form carbon atoms as well as chain. These rings are making it cyclo compounds. So let's see the structure of 2 hydrocarbons or rings are shown. Which of these is unsaturated? Unsaturated matlab double bond between carbon or triple bond. So Q has a double bond between carbon, unsaturated. Excuse me, sir. Yes. सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रही। Can you see it now? All right. So the answer should be that it's saturated on both. All right. A sample cells in the absence of air. सारी requirements उसने बता दी हैं. हमें yeast चाहिए, हमें 37 degree Celsius चाहिए, basically 40 से नीचे temperature. 40 to 40 is fine. And we need anaerobic conditions. We need absence of air. The main organic product, which obviously is ethanol, purified by fractional distillation. Okay. So we got it. Then X is oxidized. Ethanol को oxidize करें, क्या होगा? Ethanoic acid बनेगा. And that's the final product, ethanoic acid. The diagram shows the structure of a compound called ethanoic anhydride. All right. 1 mole of ethanoic anhydride reacts with water to form 2 mole of carboxylic acid only. कहाँ से बनेगा carboxylic acid? C-double-O होना चाहिए उसमें. ठीक है? This carboxylic acid reacts with ethanol
to form an ester. ठीक है? How many moles of water react with 1 mole of ethanoic anhydride, and what is the structure of ester? Interesting question. Let's see. क्या हो रहा है? कहाँ पे टूटा? यहाँ पे टूटा। यहाँ पे, ठीक है? जब यहाँ पर वो टूट जाएगा, उसके बाद वो कहीं पर, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं? दिस कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद एथेनॉल। अब वाटर से रिएक्ट करता है ना, वाटर पे OH बना सकता है और यहाँ okay. All the next paper tomorrow. Paper I've mentioned in the